evil be तो हेलो, erased, कैसे हैं आप? mind मैं be हूँ राकेश, purged, आप देख रहे हैं एनिमे world गेमर्स और be... आज भी हम खेल रहे हैं गेंशिन इम्पैक्ट। I always forget that last ज़्यादा टाइम part. को बर्बादी ना करते हुए सीधा देखते हैं अपना मिशन क्या है आज का। हाँ गलत गलत है, ये गलत टच कर दिया। मुझे लियुए हार्बर जाना है। लियुए मैंने नया नया खोला इसे, बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पर बहुत कुछ सामान मुझे मिल चुका अब तक। सीधा टेलीपोर्ट करते हैं और चलते हैं लियुए। टेलीपोर्ट। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जाइए अभी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कीजिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और पिछला वीडियो का पार्ट सब देखना भी मत भूलिएगा, वो सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। खास करके पार्ट 47 और मे बी 15, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैंने ड्रैगन से लड़ाई भी किया था, बहुत मज़ा आया। और मैं पहुंच गया यहाँ पर। If you want to find the Geo Archon, this is the only chance you'll get all year. Guess it's a good thing Venti brought it up earlier, otherwise we definitely would have missed this year's Rite of Dissension. Might be today, might also be tomorrow. Look, we're already in Liyue, so let's go ask some of the locals. Oh, right, about the Geo Archon Morax. Did you know the Mora that we use is named after this god? But it's seen as impolite for people from outside Liyue to refer to the Geo Archon by that name. So we should refer to the Geo Archon by the name Rex Lapis, like the people of Liyue do. और ये मेरा न्यू क्विस्ट स्टार्ट। जाके पूछते ही लियुए के निवासियों से कब वो कंपटीशन है, क्योंकि पाइमन को सही से पता नहीं कि कब आज है या कल है, तो पूछ लेते इनसे। Rite of Dissension. Oh yeah, that reminds me. Isn't that today? Once a year, Rex Lapis bestows upon us his divine prediction, guiding us on how to run Liyue for the coming year. Last year, it was the Yuheng of the Liyue Qixing that was given the honor of asking for the divine prediction. Ooh, Paimon knows this one! Mondstadt is to freedom as Liyue is to contracts. Liyue has a strong focus on business and trade. The Liyue Qixing, the 7 leaders of the 7 enterprises of Liyue, hold true control over Liyue. That's what foreigners always say. But true control over Liyue will always be held by Rex Lapis. The Qixing is comprised of mere mortals. Rex Lapis is a god. Mondstadt's god is nowhere to be seen, whilst our god is forever with us. Stay in Liyue long enough and you'll see. Given that you just left your godless city, it's time you experienced what it's like to be in a city whose god has walked with it through all of history. इससे बात करके मुझे पता चल गया कि वो कंपटीशन आज ही है। अगले इससे बात करना है। Oh, are you also foreigners here for the Rite of Dissension? To think I've lived in Liyue all these years and never come to see this before. I guess it's like they say, locals never visit the tourist spots. I wish you well on your travels. Liyue always welcomes you. You too wish to bear witness to the Rite of Dissension? Me too. We all do. As a businessman myself, how could I not take interest in Liyue's most important business trends? The 17 predictions given last year made more than a few ripples throughout the industry. What's more, there's been a rumor going around that the Tianshui herself, Ningguang, has been acting secretly in the shadows. She wants the rocks created by Geovision holders to be exempt from taxation. Wow, that's some super professional legal stuff, that is. To be on the pulse of the predictions and the market is what makes this harbor what it is.
Among the seven, Rex Lapis is the oldest deity. His keen sense of strategy is well trusted among his people. Understanding the predictions as soon as possible can make all the difference in making your fortune. Fortune? So where can we see this rite of dissension anyway? You're not at all close. Not to mention that if I gave you directions, as foreigners, you'd get lost along the way. So better to head to Yujing Terrace, to the high ground. It's the highest place in the harbor. Sounds like the best place for trying to communicate with deities, no? तो ये बुढ़ाऊ बोल रहा कि अगर इसने मुझे बताया तो मैं गुम हो जाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा वो कहाँ पर है। एक्चुअली मैं सच में नहीं पता, वही इससे पूछ लेना चाहिए था। मुझे लोकेशन तो दिख रहा है, सीधा चलते हैं अपनी लोकेशन पर, बट वो लोकेशन का जाने का रास्ता तो नहीं दिख रहा है ना। ये प्रॉब्लम तो वही है ना कि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा वहाँ जाने का। उसने बोला कि सबसे हाईएस्ट लोकेशन मतलब स्पॉट पे जाना है मुझे, वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पर है। तो मे बी मुझे इधर ही कहीं से जाना पड़ेगा। वेट अ सेकंड, क्या वो टेलीपोर्ट के सामने है? एक सेकंड। ओके, तो मुझे पता चल गया कहाँ पर है वो। अभी शायद वहाँ पर जाना मेरे लिए थोड़ा बहुत तो आसान होगा, तो सीधा चलते हैं अपने स्पॉट पर। स्पाइडरमैन, ये स्पाइडरमैन है। वन मोर जंप एंड पहुंच जाएंगे। चल, हाँ पहुंच गए ऊपर। और हाँ, मेरा जो पार्टनर था रमेश, उसका सच में तबीयत खराब हो गया, तो कुछ दिन से इसीलिए वो वीडियो में अपनी आवाज़ नहीं दे पा रहा है, वो मेरे साथ खेल नहीं पा रहा है। मैं यहाँ पर पहुँच गया, अभी देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। Oh, you also want a little Adepti luck too? Seems you know a lot. Making a wish during this time is sure to get you the blessings of both the Adepti and Rex Lapis himself. I've already made my wish, so you can take this. Great! Thanks! इसने अपनी सिस्टर से जल्दी मिलने का विश किया, मे बी पूरा हो जाएगा। हाँ, कुछ चमक रहा, मे बी क्या वो हो जाएगा, क्या पूरा हो सकता है, गेम है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने विश मांग लिया, अभी आगे चलते हैं। Your first time in Liyue? Actually, it's my first time to see the Rite of Dissension too. Ah, look, that's Miss Ningguang of the Liu Xixing. Only those who have control in Liyue can preside over the Rite of Dissension. Oh yeah, not sure if you knew, but most of the Adepti appear in the form of various beasts. I heard that when attending these kinds of formal occasions, Rex Lapis himself appears as a celestial cross between two of Liyue's ancient mythical creatures. Ah, sorry, I shouldn't interrupt your wish. Please, take this. यहाँ पर भी अपना विश मांग लेते हो, देखते वो पूरा होता है कि नहीं। मेरा विश पूरा हो, मेरा विश पूरा हो, मेरा विश पूरा हो, मेरा विश पूरा हो, मेरा विश पूरा हो। Great! Now that we're all done with the wishing, guess we can just wait here for things to get started. Who knows how long that Miss Ningguang lady is gonna take? Whoa, look at all the people! We gotta get up front. We can't see squat back here.
The hour is upon us. Rex Lapis has been killed. Seal the exits. What? What's going on? Did she just say Rex Lapis is... the Geo Archon is... dead? Oh no! The Millilith! Looks like they're nabbing suspects who got too close. Paimon's freaking out! The killer is amongst us! Wait. We got close. Are we suspects? Wait, where are you going? मुझे यहाँ से चुपचाप भागना पड़ेगा ताकि कोई मुझ पर शक ना कर सके। अगर भाग जाएगा अचानक तो शक तो करेगा, बट नहीं, मुझे वहाँ तक जाना है चुपचाप ताकि कोई मुझे देखा ना। और ये जो गोल गोल आँख जैसा है, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मैं सीधा आउट। अरे इसने देख लिया निकल। और मैं पकड़ा गया। शिट, पहली बार में पकड़ा गया, दूसरी बार में बच के जाऊंगा। अगर इस पानी से जाए तो क्या ये मुझे देखेगा? ट्राई करके देखते हैं। चल, पिछले बार में तो मुझे देखा आधा अधूरा, बस छोड़ दिया उसने, कुछ किया नहीं। अभी आगे सीधा चल ही रहे, आगे एक और सैनिक है, बट अगर उसने देख लिया मुझे तो मैं तो गया। और ये क्या, कोई ऊपर में है और उसने मुझे देख लिया और मेरा मिशन फिर से फेल हो गया। अब मुझे फिर से करना पड़ेगा। इस बार पक्का मैं वहाँ तक पहुँच कर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चल, पानी से फिर जाते हैं। यहाँ पर मुझे कम सैनिक दिख रहा है, आगे तो एक है, उसने मुझे देख लिया। चल छुप। और मैं यहाँ पर छुप गया। ओके, यहाँ से निकलते हैं। वो पीछे की तरफ घुमा हुआ, तो उसने मुझे नहीं देखा। अब बस कुछ ही देरी पर मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। चल यहाँ पर छुप गया। कोई है तो नहीं ना? नहीं, कोई नहीं है। चल मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गया और मैं अपना प्लेस पर पहुँच गया। ग्रेट, अच्छा है। धीरे नहीं देखा, नहीं कोई नहीं दिखा। धीरे, अबे देख लिया तेरी बात। देख लिया, निकल। नीचे कौन है? भाग यहाँ से, भाग। अबे घेरा गया, तू क्या करेगा? Hey buddy, मैं से दूर रहे, हाथ के रखिएगा। ओ व्हाट द, ये कौन है? ओ ये तो वो न्यू कैरेक्टर है जो आने वाला भी गेंशिन में तो आ चुका है ऑलरेडी। Stop! Come with me. चल रहे तेरे पीछे, चल तेरे पे भरोसा करे, तेरे पीछे आ रहा हूँ। हाँ चल, बचने का बस अब यही एक रास्ता है, इसके पास जाना। लेट्स गो। मैं भी क्या, मैं बचा या मर गया? पकड़ लिया मुझे। Paimon's exhausted. So insensitive. You have no idea just how tiring floating around. Wait, just who are you exactly? Call me Childe. इसका नाम बच्चा है, बच्चा समझा दूँ। Dote on you? बच्चा। No, not at all. It's an alias of sorts. In Mondstadt, I don't suppose you came across a Senora by any chance? Senora. Childe. You're Fatui, one of the Harbingers! Oh, no. Don't worry. I'm not looking for a fight. Senora gave you quite the bad impression, huh? Pfft, that woman. Can't say I'm a fan either. Right. Let's forget all about her, shall we? I'm here to help you.
Come now, don't be like that. I'm not a bad guy. Oh, okay, perhaps I'm kind of a bad guy, but I'm not here to give you any trouble. Would it be too much to ask for you to keep the sword sheathed? I thank you for your knightly nobility. I heard of your deeds in Mondstadt, so I couldn't help but notice you during the proceedings back there. And because I had my eye on you the whole time, I know it wasn't you. Someone else was clearly behind it. But, regrettably, given I'm a Fatui envoy from Snezhnaya, there's no way I'd be trusted after something of this magnitude. The ruling Qixing of Liyue has always been overly suspicious of us. Well, can you honestly blame them? Guess I shouldn't try to deny that. Okay, sure. Maintaining a distance between strangers is probably a good idea. Either way, I'm already used to it at this stage. But right now, if you want to clear yourselves of any suspicion, you need to get yourselves to Northland Bank. Staying here isn't an option. As the old Liyue saying goes, the walls have ears. इसने अभी अभी एक डायलॉग मारा, दीवारों के भी कान होते हैं। एक बात पे गौर कीजिएगा एकदम। अभी ये बोल रहा है कि मुझे शायद कहीं पर तो जाना है, कुछ बैंक टाइप का कुछ बोला, क्या डकैती मारने जाना है। वो तो मुझे चोर लग रहा था, ऐसे सिपाही सबको ऐसे मार के भाग गया कि जैसे कुछ वही ना हो। वेट अ सेकंड, इससे कुछ मैं खरीदूँ या नहीं खरीदूँ अभी। लेट्स सी, कुछ मेरे लिए आया है अभी। ओके, ये सब तो है, बट नहीं, ये अभी तक नहीं आया। तो चल, खरीद का भी कुछ फायदा नहीं, चल निकलते हैं यहाँ से। वेट, मुझे अभी जाना किधर, ये मुझे नहीं दिख रहा है। ये कुछ बोल के भाग गया, बट मुझे पता नहीं चल रहा वो है किधर। ढूंढना पड़ेगा हर जगह। मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर हम। मैं भी ऊपर होगा वो, चलते सीढ़ियों से। I can't wait to see my adorable daughter again. Where has Master gone this time? ऐसे जाता हूँ मैं, मेरे पास वैसे भी हर एक पावर है ऊपर जाने का, तो मैटर नहीं करता सीढ़ी है या नहीं, मैं ऊपर जाके रहूँ। ओके, तो सीढ़ी सामने, चल। अरे गिर मत जा, देख देख, तू गिर के रहेगा मेरे को लग रहा है। ओके, मैं ऊपर आ गया और ये चाइल्ड यहाँ पर ही खड़ा है। Northland Bank. Correct. This bank was opened here in Liyue by Snezhnaya. Though everyone knows Liyue is the most enterprising in Teyvat, Snezhnaya is not short of change either. Yeah, well, poorer nations don't seem the type to have diplomats that come around acting the way yours do towards the Knights of Favonius. Here, let me give you this. This is a... I'm not sure exactly. Sometimes all money can buy is things, and not a name for oneself. All I know is that it's a sigil. A sigil to keep the mighty and illuminated Adepti from bringing harm to you. Adepti? If you head north from the harbor, then west from Guili Plains, you will eventually reach a stone forest known as Jueyun Karst. The people of Liyue believe it to be the abode of the Adepti. Legend or not, they believe it. As such, offerings to the Adepti are made at its borders. Nobody dares venture in. But I have no need for believing, not when I know for a fact that the Adepti truly exist. Hate to admit it, but your Fatui intel seems alright. But why would we go looking for Adepti anyway? Oh, my little friend. There are plenty of reasons mortals seek the blessings of Adepti. Money, health, love. But you will go for justice. Justice? The Qixing will already have dispatched the Millilith. They'll be seeking out the assassin from amongst the onlookers. But how could a mere mortal kill a god that can sweep aside entire armies? Rex Lapis never gave up his power as a god. This level of crude response is beyond what is called for. How suspicious. Or to hide something else. Hard to say. Even now, the Northland Bank wouldn't be able to hold the Millilith off for long. But the Adepti can clear you of any wrongdoing. Liyue was founded by the Geo Archon and the Adepti. Of course, it was built by force.
Look for them, and be faster than the Qixing's messengers, so you may give your version of events first. If there is anyone that can help you in Liyue now, it can only be the mighty and illuminated Adepti. ओके तो थोड़ी देर पहले जिस ड्रैगन को आप लोगों ने देखा था आसमान से गिरते वो यहाँ का गॉड था। लिटरली वो लियुए का गॉड था, जो कि आई डोंट नो हाउ बट वो मारा गया। वो ये बोल रहा था कि एक किसी मॉर्टल यानी कि किसी इंसान ने उसे मारा। तो मुझे नहीं पता वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कोई मॉर्टल किसी गॉड को मारना, बट नहीं पता उतने मुझे, अभी तो खेल ही रहा हूँ। और इसने बोला है कि जो यहाँ का मैन सिपाही या कुछ है, उसके सिपाही के आने के पहले मुझे वहाँ पर जाना है और उससे बात करना है, ताकि अगर वो लोग पहले पहुँच गया तो मेरे लिए गड़बड़ी हो सकता है। शायद वो उसके मैसेज कुछ वो जो भी है उसे मार सकता है। और मैं यहाँ पर पहुँच गया, मेरे सीधे नीचे ही एकदम। तो चलते यहाँ पर देखते क्या होता है। जम ओके मैं पहुँच गया। And who might we be? ओके ये रेनडियर टाइप का कुछ दिख रहा है मुझे। मे बी यहाँ का ये सेकंड गॉड होगा, जैसे कि गॉड का बेटा वैसे ही मतलब उस लीवे के बाद ये हो सकता है, पॉसिबल है। Many a season has passed since one was last in the presence of such an item. He before you is the mighty and illuminated Adeptus, Moon Carver. Speak, traveler. What business have you here? Actually... It's the assassin! They dared to flee here to Jueyun Karst. Sir, we've already stepped too far into Jueyun Karst ourselves. There's no choice. Apprehending the assassin is top priority. We must press on. Disturbing our borders. See them gone. One will not have interruption. तो सिपाही लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मुझे सभी सिपाही को ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पर कानून के रखवालों को ही हम मार रहे हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। ख़त्म तो करना पड़ेगा सबको जाना तो पड़ेगा। सबको अभी भेज देता हूँ ऊपर। HP आधा हो ही चुका लगभग, ये ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म। ये तो गायब हो रहा है जैसे कि थैनोस जैसे किया था चुटकी वजह से। ये लोग गायब हो रहे हैं, डिसअपियर। और ये भी ख़त्म। ये ले देख तू मेरे पावर। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा सबको मैं। तू को बहुत जल्दी है रे मार खाने का। देख देख सबसे पहले तेरे को खत्म करूंगा। किधर भाग रहा पीछे क्यों जाएगा? हाँ पीछे क्यों गया? हाँ सामने से वार कर, बस सामने से वार कर। और कौन बस ये चिंदी लोग बाकी है। कितना 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 मार खाएगा? देख देख खत्म। मुझसे भिड़ने के बारे में तुम लोगों ने सोचा भी कैसे? मैं तेरे औकात से बाहर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मेरा HP भी बढ़ रहा है लगातार और ये खत्म भी हो रहा है। कम है और तू खत्म। बोला था भिड़ना गलत है मेरे से, मेरा पावर तेरे औकात के बाहर है। खत्म ना। और ये कौन? मून कार्वर है। कि चल इससे पूरा बात कर लेते फिर ही आगे बढ़ते हैं। Preposterous. Preposterous! The Liyue Qixing. Utterly disappointing.
How could someone possibly assassinate Rex Lapis during the rite of dissension, and then place suspicion upon the attendees? Traveler, of the unjust accusations placed upon you, one has become aware. The mind knows its answer. Though one must consult with one's fellows, lest the mind be misguided. Go, take your sigil of permission. Carry with you a message. Mountain Shaper and Cloud Retainer can be found here. Only fate will decide if you shall find them. Only fate. There exists a conqueror of demons, a guardian Yaksha. Go to Wangshu Inn. There you shall seek him. तो इस गॉड के अनुसार मुझे किसी पहाड़ के एकदम ऊपर जाना है और वहाँ जाने के बाद मुझे कोई मिलेगा, उससे मुझे बात करना है। तो सीधा पहले टेलीपोर्ट करके देख रहे थे कितना सामने, एकदम सामने। ज़्यादा दूर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पर 1 सेकंड में जा सकता हूँ चुटकी बजाते। मैं यहाँ पर पहुँच गया। अभी देखना वो प्लेस मेरे एकदम नीचे। चलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर कोई एनिमी रहेगा, उसे डिफीट करना है। कोई दुश्मन रहेगा? कोई नहीं। अपना हाथ कब से खाली था किसी को ठोकने के लिए। ओके, ये कोई क्या लीडिंग कुछ प्रे कर रहे हैं। I beg you. Okay, वो Show mercy दया दिखाने बोल upon रहे me हैं and my brother. Spare कि our इसका भाई को कुछ हुआ lives. है। Who are you? What's going on? We asked you first. Oh. You enjoy safe passage in Joyun Karst. It can only mean one thing. You must be Adepti messengers, sent here to rescue me and my brother. What is he talking about? Oh, have mercy, mighty messengers of the illuminated Adepti. I beg you to save us. My brother and I, we only came here because our family is poor, and we heard tell of treasures hidden in the amber of Mount Hulao. It was stupid of us. But all we wanted to do was find enough treasure to sell and support our family. We followed the path up the mountain, but suddenly, the amber, it swallowed up my brother Li Dang. I ran away and made it this far before it dawned on me. We were trespassers in the abode of the Adepti, and this was our punishment. I had no idea how to rescue my brother, so I just started praying for the Adepti to have mercy, right here on the spot. And now, at long last, 2 messengers come to my aid. What? We're not Adepti messengers. We just want to find the Adepti like everyone else. No, you must be messengers. You have to be. I have no idea which amber trapped him. Please, you have to rescue him. I beg you. Show me. Thank you. Thank you. Almighty messengers of the illuminated Adepti. I promise that we will never be so foolish again. तो ली डिंग और ली डैंग 2 भाई थे। 2 भाई आए थे ट्रेजर खोजने। ट्रेजर खोजते खोजते इन्हें यहाँ पर सोचा कि ट्रेजर मिलेगा, बट ट्रेजर तो मिला नहीं। उसके बदले इसके भाई को ली डैंग जो है वो फंस गया इन कुछ जो चमकीला टाइप की कुछ चीज़ें जिसे मैंने अभी तोड़ा। इसके अंदर से एक स्लाइम निकला, उसमें इसका एक भाई फंस गया। तो मुझे इसके भाई को ढूंढना पड़ेगा और उसे बचाना पड़ेगा। ये कौन चिंदी लोग आ गया मेरे से मार खाने। खत्म बस मेरे सामने कुछ नहीं है। पहले ज़माना कुछ और था, अभी ज़माना कुछ और है। याद रख, मैं वो वाला पुराना खिलाड़ी नहीं हूँ जो तुम लोग से पहले मार खाता था। तो वो मुझे टच भी नहीं कर सकता। तो मुझे इन सबको तोड़ते हुए जाना है और ढूंढना है कि किधर है ली डैंग, इसका भाई। ये चिंदी लोग बार बार निकल रहा है, मेरे से बार बार मार खा के जा रहा है, यहाँ से गायब हो रहा है, बार बार मर रहा है।
तो क्या मैं सीधा इसके अंदर जा सकता हूँ? मैं भी हाँ जा सकता हूँ ना, नॉट अ चांस। ये सील है किसी प्रकार के मैजिक से। इस दुनिया में मैजिक आम बात है, कॉमन चीज़ है। तो मैं इन सब को तोड़ते हुए जा रहा हूँ क्योंकि ये इसे अपडेट करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। जहाँ पर भी मिले लेते चलो, काम आएगा। और मिला, और ये चिड़िया का अंडा, वेरी वेल। नहीं मिला नहीं, वो पता नहीं कहाँ गया। नहीं मिल गया। और लीडिंग ने बोला कि उसका भाई ये कहीं पर हो सकता है, तो मुझे सबको तोड़ते हुए जाना है और ढूंढना है कि उसका भाई किस में हो सकता है। ये बंदर लोग बार बार बीच में आया था और मेरे से मार खाता है। जरूरत है बोलना पीटने का, चुपचाप तू रह सकता है भी। यहाँ पर तुझे आने की ज़रूरत नहीं था, फिर भी मार खाने के लिए आता ही है। चल अगर तू आ सकता है, मैं तुझे मार क्यों नहीं सकता? तुझे मारना ख़त्म करना मेरा फ़र्ज़ बनता है तब। इसे भी तोड़ के देखते इसके अंदर हो सकता है उसका भाई। और हाँ, आई एम राइट, लीड डैंग इसी के अंदर है। इसका हालत ख़राब लगता है, इसको पता भी नहीं क्या हुआ, बट ये थैंक यू कर रहा है। ओके, नॉट आई एम द हीरो। Oh, and have you seen my brother? His name is Li Ding. We were climbing the mountain together. I just hope he didn't get trapped in Amber too. Phew. So he's safe then? Oh, thank you. I will head up to find my brother now. Here's hoping I don't run into any more Amber on the way. दोनों बंदर बच गए। मैंने इसको रास्ता भी बता दिया। ली डैंग के ऊपर है, अभी वो ऊपर चला गया उसके भाई से। मैं ऊपर जाऊंगा या नहीं? मेरे को तोड़ते हुए इन्हें लेते हुए चलते हैं, ये हमारा बाद में काम आ सकता है इस कैरेक्टर को अपडेट करने में, क्योंकि हाँ इस कैरेक्टर को अपडेट करने में ज़्यादातर हाथ उसी पत्थर का है। चलो ऊपर चल और जाके देखते हैं दोनों बंदर क्या कर रहे। क्या वो मेरे लिए रुके हुए या फिर चल गए? हाँ मेरे लिए रुके हुए, दैट्स अ ग्रेट थिंग। चला दोनों बंदर से बात करते हैं। लीड एंड बता। Thank you for rescuing my brother, mighty messengers of the illuminated adepti. अरे मैं गॉड का किसी मैसेंजर नहीं हूँ, मैं बस एक I mean, like everyone else, we've heard that there's an adeptus living in Mount Hulao. Regular folks like us would never have the chance to meet them. No, unlike you guys, you're adepti messengers, so it's a whole different story. Anyway, we have trespassed in the realm of the adeptus for long enough. We should get going. Thank you, mighty adepti messengers. Yes, thank. Boy, it'd be super helpful if we actually were adepti messengers. 'Cause it seems like this adeptus has got a real temper problem. But it's not like we've done anything wrong, so hopefully. Who dares trespass on my mountain? Foolish mortal, come forth. तो इस पक्षी से हम बात करेंगे अगले एपिसोड में और अगले पार्ट में। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अरा अरा सयोनारा, बाय बाय।